हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक का पहले हम 11th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 11th नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले उसको समझते हैं फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो आपकी बुक का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन, वो है 11 नंबर का क्वेश्चन। स्टेट whether the following are true or false, justify your answer. So you have to justify your answer. First question, the value of 10 is always less than 1. No student, it's false. Why? Because 10a is the ratio between perpendicular and base except hypotenuse, है ना? So 10 is the ratio between perpendicular and base which may be equal or unequal to each other. परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं, इसलिए ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा 10 है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, sec is 12/5। sec is 12/5 क्या पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज sec is the reciprocal of cos. If sec is 12/5, it means cos is 5/12. 5/12 means cos is less than 1, and cos theta is always less than 1. It means sec is equal to 12/5 is true. Is it clear? Now, next question. Cos is the abbreviation used of the cosecant of angle A? No. Students, cos एक्चुअली कॉस है क्या? कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस बोला गया है ना? कॉसकेंट तो शॉर्ट फॉर्म कॉसेक का होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं, इट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज कोसाइन ए इज ऑब्रिविएशन एस कॉस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A is the product of cot and A? No, it is not possible because cot A सिंगल टर्म जो है ये मीनिंगफुल है। अकेला अगर आप कॉट लिखते हैं तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना? इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल मीनिंगफुल टर्म वेयर एज कॉट अलोन हैज नो मीनिंग। कॉट अलोन की कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आप रेशियो ले लीजिए, साइन अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उसके साथ साइन का एंगल नहीं लिखेंगे। सिमिलरली कॉस की भी कोई मीनिंग नहीं जब तक आप उसके साथ एंगल नहीं लिखेंगे। आपको कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा साथ में एंगल लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। 4/3 क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज 3 1 जा 3, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज साइन ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपकी बुक का है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90। एंगल B इसमें आपको 90 डिग्री गिवन है। ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। AB इज 24 सेंटीमीटर, BC is 7 centimeter, so you have to find sin A and cos C. So now first we have to draw one right triangle. So now we have to draw one right triangle. Right triangle ABC, angle B is 90. So
this is 90 degree, and you know in right triangle angle side opposite to 90 degree is called hypotenuse. So but before finding the ratio of trigonometric ratios, first we have to find out third side, because in this problem we know AB and BC, but we don't know what is AC. So first we have to find out the value of AC. If you know the two sides of right triangle, then how to find third side? Using Pythagoras theorem. So AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, using Pythagoras theorem. Hypotenuse is equal to square is equal to perpendicular square plus base square. AC square is equal to, what is AB? 24. What is BC? 7. AC square is equal to 24 square is 576 plus 49. What is AC? AC square is 625. Now AC is root 625, that is 25. So now we get AC is 25. But we have to find out sin A and cos C. So first we have to discuss angle A. So for angle A, side opposite to angle is called perpendicular. So what is perpendicular? Perpendicular is BC. Side opposite to 90 degrees is called hypotenuse. So what is hypotenuse? AC. Head side base, that is AB. Is it clear? So sin A, some people have BC upon AC. What is BC? BC is 7. What is AC? AC is 25. So now this is sin A. For angle C, what is perpendicular? So side of the given angle is called perpendicular. So now perpendicular is AB. Side opposite to 90 degrees is called hypotenuse. So hypotenuse is AC. Third side base. What is base? Base is BC. So now we have to find out cos C. Curly black hair. What is base? BC. What is hypotenuse? AC. What is the value of BC? BC 7. So now the answer is 7 upon 25. Is it clear? Any doubt? Because in this triangle two sides are given, first we have to find out third side with the help of Pythagoras theorem. उसके बाद हमने एंगल A से डिस्कस किया साइड को, sin A निकाला, एंगल C से डिस्कस किया साइड को, cos C निकाला। Now सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको
फिगर गिवन है, इन दिस ट्रायंगल PQR, angle Q is 90 degree, PR is 13 centimeter, PQ is 12 centimeter, and now you have to find tan P minus cot R. You have to find out tan P minus cot R. Again in this problem we know two sides, so first we have to find out third side. So PR is 13 centimeter, PQ is 12 centimeter. So again using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. PR is 13, PQ 12, QR we have to find out QR. So 13 square is 169, 12 square is 144. So now QR square is 169 minus 144, that is 25. So that is, what is QR? QR is root 25. It means QR is 5. Now again we have to discuss angle P and angle R. So for angle P, side opposite to given angle is called perpendicular. So perpendicular is QR, side opposite to 90 degree, hypotenuse, third side base. Now we have to find out tan P through proper brushing. Proper brushing. What is perpendicular? QR. What is base? PQ. QR is 5 and PQ is 12. Now the answer is tan P is equal to 5 by 12. Now we have discussed angle R. For angle R, this angle. So what is perpendicular? Side opposite to given angle is called perpendicular. It means perpendicular is PQ. Side opposite to 90 degree is called hypotenuse. Hypotenuse is PR. Third side base, that is QR. Now we have to find out cot R. Cot R कितना होगा? Through proper brushing, इसका reciprocal, base upon perpendicular, QR upon PQ. So now cot R, QR, what is QR? QR is 5. What is PQ? PQ is 12. Clear? So we have to find out tan P minus cot R. Tan P कितना है? 5 by 12. Cot R कितना है? 5 by 12. 5 by 12 minus 5 by 12. Now we get answer 0. This is the answer. This is second question of your NCERT. Now
Question number 3. Question number 3 is sin A is equal to 3/4, and you have to find out cos A and tan A. Find cos A and tan A. साइन होता कितना है? सम people have. So what is perpendicular? Perpendicular is 3, hypotenuse is 4. ये हमने आपको बताया था कि बिकॉज ये रेशियो है इसलिए हमको साथ में क्या लिखना पड़ेगा कि 3k and 4k. Now we have to find out third side with the help of Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. 4k square is equal to 3k whole square plus base square. 4k square means 16k square. 3k square means 9k square plus base square. Now the value of base square is 16k square minus 9k square. Now base square is 7k square base is root over 7k square, that is root over 7k. So what is cos A? Cos A curly black hair root 7k upon hypotenuse is 4, that is root 7 upon 4. What is tan A? Through proper brushing, what is perpendicular? 3k. What is base? Root 7k. Now the answer is 3 upon root 7. This is your NCERT question number 3. Now we have discussed question number 4. In this question, question number 4, 15 question number 4 is 15 cot A is equal to 8. You have to find sin A. In this question, 15 cot A is equal to 8. Therefore, what is cot A? Cot A is 15 by 8. Sorry, cot A is 8 by 15. But cot A is reciprocal of tan A. Tan is through proper brushing. So it is base upon perpendicular. Therefore, base is 8k. Perpendicular is 15k. So now first we have to find hypotenuse with the use of Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem
h square is equal to p square plus b square. H square is equal to 15k square plus 8k square, which is 225k square plus 64k square. H square is 289k square. So now the h is root over 289k square. 289 is the root of 17. Hypotenuse is 17k. So what is sine A? Sine A is perpendicular upon hypotenuse, that is 15k upon 17k or 15 upon 17. This is the answer. ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एनसीईआरटी बुक का. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is sec theta is equal to 13 by 12. So now you have to find out all other trigonometric ratios. Find all other trigonometric ratios. Sec theta is 13 by 12. Sec क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos. Cos क्या होता है? कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो sec कितना होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस. sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. So what is hypotenuse? 13k. And what is base? That is 12k. Again we know two sides, so first we have to find out third side using Pythagoras theorem. H square is equal to p square plus b square. 13k square is equal to perpendicular square plus 12k square. 13 square 169, k square को वैसे ही लिखा. 12 square 144. So now what is p square? P square is 169 k square minus 144 k square. So now p square is 25k square. So now the p is root over 25k square. Root over 25 is 5. Root over k square is k. So now we get perpendicular is 5k. You have to find out all other trigonometric ratios. So now we will start from sine. Sine से हम लोग start करेंगे. जब आप लोग साइन से स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे सम पीपल हैव. व्हाट इज परपेंडिकुलर? 5k. हाइपोटेन्यूज है 13k. ये आंसर आ गया आपका 5 by 13. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक. कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. ये हो गया 13k upon 5k. Now the answer is 13 upon 5. Cos theta curly black hair base is 12k
hypotenuse is 13K. Now the answer is 12 by 13. 10 क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. Perpendicular is 5K. Base is 12K. Now the answer is 5 by 12. Cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? Cot. 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? Cot थीटा. ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. 12K अपॉन 5K. Now the answer is 12 upon 5. ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6. If angle A and angle B are acute angles, given cos A is equal to cos B. So now you have to show that angle A is equal to angle B. So now first we have to draw one right triangle. Angle A and angle B are acute. Angle C is 90 degree. So for angle A, what is perpendicular? Side opposite to given angle is called perpendicular. BC. What is hypotenuse? Side opposite to 90 degree is called hypotenuse. What is base? Height side is called base. So what is cos A? Curly black hair, AC upon AB. Now for angle B, what is perpendicular? Side opposite to given angle, that is AC. What is base? Base is BC. What is hypotenuse? Hypotenuse is AB. Now we have to find out cos B. Curly black hair, BC upon AB. This is cos B. तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. Now given cos A is equal to cos B, therefore AC upon AB, value of cos A is AC upon AB, is equal to BC upon AB.
वैल्यू ऑफ cos B is BC upon AB. AB cancel. AC is equal to AB. In this triangle AC is equal to, sorry, AB नहीं BC, because AB cancel हो गया, AC is equal to BC. In this triangle AC is equal to BC. So 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, साइड एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A is equal to एंगल B. Why? Because angles opposite to equal sides are equal. Hence proof. ठीक है. Now question number 7. So question number 7 is, cot theta is equal to 7/8. So now you have to find 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second, you have to find out cot square theta. So in this question cot की वैल्यू गिवन है 7/8. cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल. tan क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो cot कितना होगा? So cot theta is base upon perpendicular, that is base is 7k, perpendicular is 8k. मैंने बताया ये रेशियो है, इसलिए साथ में आपको कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये रेशियो है. ठीक है ना. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, so now we have to use Pythagoras theorem. H square is equal to P square plus B square. H square is equal to 8k square plus 7k square. H square is equal to 64k square plus 49k square. H square is equal to 49k square. H square is equal to 113k square. So what is H? H is root over 113k square. रूट ओवर 113 तो होता ही नहीं, तो इसको रूट ओवर ही लेके रहने देते हैं. के स्क्वायर को बाहर निकाल लिया हमने, ये आ गई H की वैल्यू. So now we have to find out 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. इसको जरा ध्यान से देखिए. a plus b into a minus b, that is a square minus b square. 1 square minus sin square theta. नीचे भी देखिए a plus b into a minus b, a square minus b square. यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square.
साइन की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे साइन निकालना हम भूल गए थे। साइन होता है सम पीपल हैव, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 8k अपॉन रूट ओवर 113k, दैट इज 8 अपॉन रूट ओवर 113। कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर्ली ब्लैक हेयर, बेस कितना है 7k अपॉन रूट ओवर 113k, that is 7 upon root over 113. Now we have to put the value, sin और cos की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये हो गया 8 अपॉन रूट ओवर 113 होल स्क्वायर माइनस होल अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट ओवर 113 होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व किया, 8 का स्क्वायर 64, रूट ओवर 113 का स्क्वायर 113, 7 का स्क्वायर 49, रूट ओवर 113 हो गया 113। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम, ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 ये हो जाएगा 49 अपॉन 113, ये हो जाएगा 64 अपॉन 113। So now the answer is 49 upon 113 into 113 upon 64, that is 49 upon 64। फाइनली इसका आंसर आ गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 7/8, 7/8 होल स्क्वायर 49 अपॉन 64। So this is question number 7 in your textbook. Now we have to discuss question number 8. Question number 8 is, if 3 cot A is equal to 4, so now you have to check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. This is the question. So since 3 cot A is equal to 4, that is, what is cot A? Cot A is 4/3। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, tan का रेसिप्रोकल tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज बेस 4k, व्हाट इज परपेंडिकुलर 3k। नाउ अगेन वी नो इट्स टू साइड्स, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड साइड। So using Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, h square is equal to 3k whole square plus 4k whole square
9k square plus 16k square 25k square. So what is h? Root over 25k square. Root over 25 is 5. Root over k square is k. So now hypotenuse is 5k. सबसे पहले आप tan, sin and cos फाइंड आउट कर लीजिए. What is tan A? Through proper brushing, that is 3/4. What is sin A? Some people have. So perpendicular is 3k and hypotenuse is 5k, that is 3/5. What is cos A? Curly black hair. What is base? 4k. Hypotenuse is 5k. Now the answer is 4/5. So first we have to take left hand side of the question. Left hand side is 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Now you have to put the value. Tan is 3/4. 3 square is 9, 4 square is 16, 3 square is 9, 4 square is 16. Taking LCM, 16 minus 9. Taking LCM, 16 plus 9. 16 minus 9 is 7. 16 plus 9 is 25. So now the answer is 7/25. 16 cancel. Now we have to take right hand side. Right hand side is cos square A minus sin square A. Value of cos A is 4/5. Value of sin is 3/5. Squaring 16/25 minus 9/25. Now taking LCM, LCM is 25. 16 minus 9 is 7. Hence, left hand side is equal to right hand side. Yes, it's true. Is it clear? Now, question number 9. So now the question number 9 is, in triangle ABC, angle B is 90 degree. If tan A is equal to 1/√3, so you have to find out sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. In triangle ABC, angle B is 90. The first we have to draw one right triangle whose angle B is 90 degree. So first we have to draw one right triangle
angle B is 90. Tan A is 1 by root 3. So for angle A, what is perpendicular? Side opposite to given angle is called perpendicular. It means perpendicular is BC. Angle A के opposite side क्या है? BC. What is hypotenuse? And side opposite to 90 degree. AC. What is base? Third side is base. AB. Tan A is 1 by root 3. And what is tan A? Through proper brushing. What is perpendicular? BC. And what is base? AB. It means BC is K and AB is root 3K. So we know two sides of right triangles. First we have to find out third side of right triangle. So using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to what is AB? Root 3K. What is BC? K square. Root 3 square is 3. K square is K square. 3K square plus 1K square कितना हुआ? 4K square. So now, what is AC? AC is root over 4K square, that is 2K. So now we get this third side 2K. So sin A some people have BC upon AC. What is BC? Okay. What is AC? 2K. So now the value is 1 upon 2. This is sin A. What is cos A? Curly black hair. What is base? AB upon AC. AB is root 3K. That is root 3 by 2. Now for angle C. Side opposite to given angle is called perpendicular. So perpendicular is AB. Hypotenuse side opposite to 90 degrees called hypotenuse. Head side base. So what is sin C? Some people have perpendicular AB, hypotenuse AC. AB is root 3K, that is root 3 by 2. What is cos C?
curly black hair, base is BC, BC upon AC. What is BC? BC is K 1/2. So now we have to find out the value of sin A cos C plus cos A sin C. Sin A 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 into √3 3, 2 2 जा 4. Taking LCM, now the answer is 4/4, that is 1. आंसर कितना आएगा इसका? 1. Now we have to find out second one, second question. Cos A cos B minus sin A sin B. What is cos A? √3/2. What is cos B? सॉरी, cos A cos C चाहिए था, and sin A sin C. So what is cos C? 1/2. What is sin A? 1/2. What is sin C? √3/2. √3 into 1 is √3, 2 2 are 4. √3 into 1 is √3, 2 2 are 4. Cancel. So now the answer is 0. So this is your textbook question number 9. This is question number 9. Now question number 10. This is question number 9. Now we start question number 10. 10th question को start करते हैं. Question number 10. Triangle PQR. Angle Q is 90 degree. PR plus QR is 25 centimeter. And the PQ is 5 centimeter. So now you have to find out sin P cos P tan P. So now look here. Here PR plus QR is 25. In this right triangle, this is angle Q, which is 90 degree, angle P, angle R. ठीक. So हमने suppose कर लिया let PR is X, so it become X plus QR is equal to 25. So what is QR? QR is 25 minus X. ये QR की वैल्यू आ गई. Clear? Now in this right triangle we have to use Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square plus QR square. What is PR? PR is X. What is PQ? PQ 5 given है,
क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, यहाँ पे हम लगाया ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आए, इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, 25 प्लस 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 50x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 50x को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, ये हो गया 650, therefore x is equal to 650 upon 50. So what is x? x is 13. x 13 आ गया, मतलब क्या 13 आ गया, PR is 13 centimeter. So what is QR? QR is 25 minus x, that is 25 minus 13. Now the value of QR is 12 centimeter. Sin P find out करना है. Some people have what is perpendicular, side opposite to given angle is called perpendicular. What is hypotenuse? Side opposite to 90 degrees is called hypotenuse. QR is 12. What is PR? PR is 13. Cos P, curly black hair. What is base? Base is PQ. Hypotenuse is PR. PQ की वैल्यू कितनी है, तो गिवन है आपको ऑलरेडी 5 by 13. tan P कितना होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. व्हाट इज परपेंडिकुलर, QR. व्हाट इज बेस, PQ. QR की वैल्यू कितनी है 12, PQ की वैल्यू कितनी है 5. तो ये आपकी NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 था. क्वेश्चन नंबर 11 हमने सबसे फर्स्ट चांस पे डिस्कस कर दिया था. तो इस तरह से आपकी ये NCERT की 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी. ओके, अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए. कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू.